Hello kids! Today we are going to talk about diversity in the animals around us and how to classify them. In the previous episode or in the previous short, we talked about what is biodiversity. So, आप अपने आसपास देखते हैं कि चींटी से हाथी तक इतनी वेरिएशन हमें एनिमल्स में देखने के लिए मिलती है. क्विकली लुक एट दिस फिगर. यहाँ पे आपको कितने अलग अलग तरीके के एनिमल्स मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस. देयर इज एन अर्थवॉर्म, फिश, गोट इज देयर, एंट इज देयर, एलिफेंट इज देयर, डक, pigeon, frog, even a creature with a shell, है ना, shell वाले worms भी हैं यहाँ पर, butterflies there. Now, अगर आपको किसी चीज़ को स्टडी करना है तो आप क्या करते हैं? You group them, right? For example, अगर आप अपना सुबह स्कूल बैग लगा रहे हैं तो आप अपने बैग के अलग अलग कंपार्टमेंट में क्या करते हैं? नोटबुक डालते हैं, बुक्स डालते हैं. Why do you do so? Because it makes things easier to understand and to organize. राइट. सो टुडे वी आर गोना जस्ट डू दैट. हम एनिमल्स को स्टडी करने के लिए उनको क्लासिफाई कर देते हैं कैटेगरीज में. दिस सिंपल थिंग इज कॉल्ड ग्रुपिंग. सो नाउ लेट्स क्विकली सी हाउ टू ग्रुप एनिमल्स. सो in a very basic form we can group animals in two categories. So the first one is on the basis of the type of movement. सो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग टाइप की मूवमेंट शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सम कैन फ्लाई, सम कैन वॉक, सम कैन हॉप, सम कैन जंप. सो हम उनकी टाइप ऑफ मूवमेंट के हिसाब से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. अनदर क्लासिफिकेशन इज based on the type of habitats. For example, you see that there are so many organisms, so many animals which live underwater. So those animals are called aquatic animals. Okay, so on the type of habitat we have three classification: aquatic, terrestrial and amphibians. So जितने भी underwater रहते हैं उन सब animals को हम कहते हैं aquatic animals. We, including us and majority of the animals, stay on the land. We are called terrestrial animals. And then we have frogs, which can live both or which can survive both inside the water or on the land. So those are called amphibians, which can survive in both type of habitat. So depending upon the habitat we can divide them. And another criteria I already told you, type of movement, which can be either flying, running, crawling. Snake can crawl, earthworm can crawl. There are so many creatures which can crawl. So crawling could be one criterion. Walk, we walk. A cow walk, but a cow never usually run. But who runs? A cheetah runs, lion runs, tiger runs, right? So they comes in this category, running. And then hop, a frog or a toad will hop. Jump, monkey. Simple example for jumping. Very quickly, let us see some examples here. So fly वाली category में देख लेते हैं. There is a mosquito, there is a bird and there is a butterfly. अब देखो, छोटे से मस्कीटो से लेके इतने बड़े बर्ड तक हम इन तीनों को एक कैटेगरी में उठाकर यहाँ पे रख सकते हैं. सो वी मेड ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट. यू कैन कम अप विद दिस ऑन योर ओन. That would be a good exercise. Now quickly look into aquatic world and amphibian world. So all these creatures, octopus, seahorse, dolphin, crab, fish, turtle, they both live underwater. So we categorize them as aquatic animals. And then we have frog and salamander. These are examples of amphibians. And we come here. Terrestrial organism. So simple. That's how we classify animals. In the next episode, we're going to talk about how to classify plants. So stay tuned for that. Bye bye.